विकास आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ इसमें शेयर करनी है ना अभी। Friends, everybody mute yourself except Vikas and me for a time being. ठीक है विकास जी, आपका एक बार सेटअप हो जाता है, then you can start. Not an Okay. Hi sir, good to see you. Hello, good evening, sir. Yeah. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Perfect. Take your time, sir. Not an issue. Oh, I just reached. Can you see the screen, sir? Yes, I can see the screen. You just need to make it the full screen. That's it. I think we can start now. Yeah, we can start, sir. Okay, So you can reintroduce yourself because I couldn't do it properly. So okay. I'm sorry for that. No problem, no problem. Myself, Dr. Sri Valsan, the listeners who are joining now. Uh, I am associated with Professor Sir now over 10 years now. And he asked me to take some uh, topic, financial topics. So I thought, why not balance sheet? So, uh, Ramesh ji, my voice is audible, right? Yeah, audible. It can be better also. Slightly less, but it is audible. Okay. So, right. So This this is is better. This yeah, is better. yeah. Any point of time, if you have any this thing, just course correct me. No issues. So, as you can see on the screen, I will be talking about balance sheet. So, uh, this is a topic like which can be taught in 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes or 1 hour, 2 hour, or even for days and weeks. So it depends upon the depth that you want to cover. And so I will try to make it interesting as much as possible from my side. And so just yeah, we will start. So here I have shown you the three main financial statements. So whenever you are talking about financial statements, the three main statements that are present for any financial firm is uh, balance sheet, income statement, and cash flow statement. So these are the statements which tell about the financial health of the company. So here I will try to uh, explain about balance sheet. So in this group, some participants might be already from the financial background or might be working in banks or some other institution who have in-depth knowledge. So this is to cover the basics. That's what I mean to share here. So what is a balance sheet? So you can see so many people talk about balance sheet uh, at ease. They can at a breath they can tell about balance sheet and all. So what is the meaning of balance sheet? So it is a snapshot. Actually, it is a in a single point of time. It's a snapshot of a business assets, liabilities, and equity at a single point in time. That means you are taking a particular date, like it's like having a cross section. You are having a particular point in time where you are seeing the company's assets, liabilities, and equity. So that is the basis of balance sheet. Now, so we'll for the sake of uh, easy interpretation, we'll call assets as A, liabilities as L, and equities as E. So the core principle is that whatever stuff that a business owns, whatever stuff that a business owns should, in principle, match with the stuff that the business owes. It's like an input and an out. So whatever the business owns should match with the stuff that the business owes. So there is a balance. So as we saw in the definition of balance sheet, we have assets, liabilities, and equity. So what the company owns or what the business owns is called assets.
and what the business owes, that is to third parties, it's called liabilities. At the same time, the business owes something to the owners, which is called the equity part. So, in other words, you can say assets should equal liabilities plus equity. Liabilities for third parties and equity for owners. So this is the basic accounting equation which we get from this balance that exists in a business. That is A is equal to L plus E. The asset should equal to liabilities plus equity. It forms the basic accounting equation. Then coming to a structure of a balance sheet. What is the format? So as I mentioned, it is a snapshot at a single point of time. So you will have a particular month, uh, date and year. So on the left side, you can have assets, the total of all the assets, liabilities and equities on the right side and their total. So this total on the left side should match the total on the right side. Now we'll little bit expand this format. So if we little bit expand the format and we try to introduce more lists under each heading, we can further divide into assets can be further divided into the current assets and the total of the current assets. Here again we have different categories. So the total of current assets and non-current assets. So under assets you have current assets and non-current assets. The total of current assets and total of non-current assets. This together will form the total assets. Similarly, on liability side, similarly, now we'll see the current asset sides. So what are the points under current assets? Current assets, we have the cash, the accounts receivable, other receivable and prepaid expenses. And under non-current assets, we have the uh, property, plant, equipment, and the intangible assets like the brand value. So current assets is something uh, that you can use within 1 year, and non-current asset is something that uh, that is for more than 1 year, so which can be used, and the total is the total assets. Similarly, on the liability side, we can divide into the current liabilities and the non-current liabilities. So here you had the uh, accounts receivable on the asset side, but on the liability side, you have the accounts which are your payable accounts, the tax that you have to pay, the accrued expenses, and the deferred revenue, which will form the total current liabilities. And the non-current will be your long-term loans, the long-term loans that the company has taken for uh, a year of more than 1 year. So I hope you understood. On the asset side, we have the current assets and non-current assets, their total. And on the liability side, we have the current liabilities and non-current liabilities and their total. So asset is anything of value that is owned by the company. Anything of value that is owned by the company will come under the asset section as current assets or non-current. Current means less than 1 year and non-current means be more than 1 year. And the liabilities will be the financial obligation, the debt or the financial obligation that is owed to someone else by the business or the company. It will be current liabilities or non-current liabilities. And uh, then comes the equity part. The equity part is the capital contributions by the owners and the
retained earnings. The earnings which are retained will form the equity. So that is a total equity. So on the left side, total assets should match the total liabilities and I hope you understood. Yes sir. सर So I थोड़ा have माइक और ज्यादा क्लोज रखेंगे तो ज्यादा अच्छा वॉल्यूम आएगा सर. okay. Right. So again, I have tried to put it in a table. On the left side, you have the assets, and the right side, you have the liability plus equity. So as I told, asset part shows the application of funds. All the uh, application of funds will come under the asset part. So current assets, as I mentioned, it is used within 1 year, and it has points like the cash balance, the amount that is uh, present in your bank as cash, and the accounts receivable and the inventory. Like if you are is let us say if it is a farm based business, and you have certain inventory of some grains, so you can always within 1 year you can always any time of the year you can uh, sell it out and you can generate cash. So that inventory which you can cash out will be current asset. But in non-current assets, the assets which are present for more than 1 year, it can be divided into items which you can touch and which you cannot touch, intangible assets. So in the last slide, I told you the plant, machinery, equipment, land, everything, whichever you can touch and feel with your hand, will and which are for long-term uh, prospect. Those are under the non-current assets. The brand value, the goodwill, everything will come under the intangible non-current assets. So if you are having a bank FD in the name of a company for more than 1 year, let us say for 3 years, that amount will come under non-current assets. The office space, the vehicle, machine, plants, patents, and goodwill, everything will come under the non-current assets. Similarly, on the liabilities and equity side, the liabilities and equity will show the source of funds, and current liabilities will be the obligations, financial obligations or debt for less than 1 year, and non-current will be for more than 3 years. The capital contribution is sometimes called as common stocks, and the retained earnings are the profits which the company has kept for future use. And the total should match. So how do we get all these points to create a balance sheet? So it is usually bought from a trial balance. So you have the journal entries and the ledgers for the transactions that the company is doing. From that, you prepare a trial balance that is nothing but an accounting report showing the closing balances in all general ledger accounts at a point in time. So from that trial balance, you should take the points and you should make the balance sheet. So as I told, there are some guidelines to prepare balance sheet depending upon the uh, sector or category to which the company belongs. So if you're farm based, you have the farm standards guidelines, and for listed companies, you have to uh, create a balance sheet. I mean, the company has to create a balance sheet according to the Companies Act of 2013, the Schedule 3, Part 1, and they have prescribed a format where it should be in a vertical format. So it should be in a vertical format with the equities and liabilities on one side with their current and non-current part. Similarly, below it should have assets, current and non-current assets. So having understood the format and the structure of balance sheet, we should know why this balance sheet is critical. It is critical because it provides insights about the financial health of a company. It will show how much
assets the company owns, how much liabilities it owes, how much contribution has been provided by the owners. So it's a snapshot of the financial health. It it provides executives to craft strategy. So on March 31st or yearly balance sheet or quarterly balance sheet, it helps the executives of the management to craft a strategy that where we are lacking, if we are lacking in current assets or we are lacking in non-current assets, how to improve the assets of the company, how to reduce the liabilities. So it helps to guide the management to set a strategy. For an investor, he can go and look into the balance sheet of the company and he can decide whether it's a company which is worth of funding. Can we fund this company? Can we provide funding looking at the balance sheet? So their team can go through the balance sheet and they can analyze. From the side of an employee, it helps to understand the organization goal. It helps the employee to understand what is the direction of the company and where it is performing well, where it is not performing. And similarly, as a retail investor, to some extent, it will help you to know the financial health of the company. So now, few books that I want to share uh, for understanding balance sheet or to develop an interest. I myself developed an interest in these things by uh, going through these books. One of the very famous books for starting the journey in reading and understanding balance sheet, I would recommend is the Romancing the Balance Sheet by Anil Lamba. It's a very good book, and it has given some good points and uh, good guide for going through the framework of balance sheet. Then, and another book would be the Visual MBA by Jason Barron. So it is more an illustrative type book, uh, a quick guide to everything you will learn in 2 years of business school. So he has covered many financial uh, topics, and the balance sheet part in this book is also very good to understand the structure of a balance sheet. So yeah, so I would like to thank Dr. Ashutosh for giving me this opportunity, and yes, thank you so much, sir. Over to you. Thank you, sir. Thanks for this update. What we would also love to hear maybe next time, because I have kept that topic of fundamental investing. So I was looking for forward for that. Maybe the part two of this can be uh, that where we can how to choose the stocks. So how Yeah. to fundamentally look for stocks, which variable to focus on, how to select, what kind of filters we have to put, whether we have to do a bottom-up approach, then how to look at it, and how to look at it for top-down approach, and those two parts. So maybe we can cover that next time, and based Anybody on has any question? availability. I can. Yeah, we can open for Q&A now. So related to whatever has been discussed as far as balance sheet is concerned. Can I go with my question? This is Yeah, yeah, Prashant. definitely. Yeah, Prashant. Hey. Thank you, Valsan sir, Yeah. for this wonderful session. So basically, see, I'm a non-finance person. I do not understand any finance related stuff. So balance sheet was the taboo word for me. I I haven't been through that. So you made it very easy. Yeah. And I would like to have the next sessions with the perspective of a non-finance person. How Okay. would a person with the non-finance background Yeah. would go on understanding all sorts of different ratios that are being considered Okay. while picking an investment stock? Apart from understanding business, what are the technicalities of the fundamental analysis? So we would like to have those covered in the subsequent session. So that was just one thing. Yeah. And
See, assets and liabilities part is quite clear, but there might be some nitty-gritties that we'll have to go through. So any sample balance sheet or any example that just for a reading exercise that we Sure. can go through. So, If you have any, please share. yeah. So, Maishi, hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, yeah, what he asked is correct. So I just gave you a brief picture of a balance sheet. So अगर आपके हाथ में कोई एक A4 शीट पकड़ाता है और बोलता है कि इसमें इस कंपनी का मार्च 31 का बैलेंस शीट है, तो इट शुड नॉट लुक लाइक ए ग्रीक और लैटिन और सम रॉकेट साइंस टू यू. तो आप वो A4 शीट देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें दो सेक्शन है, एक एसेट साइड है, एक लायबिलिटी साइड है, प्लस इक्विटी L+E साइड है, एक ए साइड, और उसमें एक करंट एसेट साइड है, एक नॉन करंट एसेट है, अदर साइड में करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, एंड इक्विटी. तो इतना तो कम से कम समझ में आना चाहिए to that person, whoever. Otherwise, he is like illiterate. He will tell, I don't know what is written. So more than the numbers, it's the framework that you should understand. So I am also not from a financial background, and uh, purely because of my interest. So मेरे लिए ये totally एक you can say a 180-degree shift है कि I went from right side to left side like that. So what my understanding is, अगर आप कोई चीज किसी 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड बच्चे को समझा नहीं सकते हो, that means you also don't know. So I have tried to learn things in such a way that I myself feel that yes, I know this thing, and if somebody asks me, I can tell him that देखो इसमें ये सब चीजें हैं in 5 or 10 minutes, like telling a 5th standard or 6th standard student. That is the basic thing from where I have built up my knowledge. And I'm not a financial advisor or not a SEBI registered advisor, but I I see this uh, as a passion, or you can say as a way of learning new things, as a part of continuous improvement and continuous learning. So what Prashant sir now has brought up, the point is very relevant. So now you have understood the framework of the company, and you know that a balance sheet looks like this. बस इसके नीचे वो जिसने भी प्रिपेयर किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, जिसका भी इसमें रोल है, और CFO, दे विल साइन बिलो द रिपोर्ट. उस A4 शीट के नीचे हेडर में इस कंपनी का नाम होगा, डिटेल्स होंगे, और फुटर में किसने साइन किया है वो होगा. बाकी दुनिया में हर जगह बैलेंस शीट का लैंग्वेज यही होता है. सो इसको ऐसा कह सकते हैं कि आ, अगर आप क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो, तो किसी को हम कैसे समझे कि दिस पर्सन नोस अबाउट क्रिकेट. ही विल टॉक इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्रिकेट. ही विल से कि इसने फ्रंट फुट पे आके मारा है, या स्क्वायर कट शॉट मारा है, या पुल शॉट मारा है, या फील्डर को लॉन्ग ऑन पे खड़ा किया है, या स्किप में कोई खड़ा नहीं है. सो that will tell that this person knows because he is talking in the language of cricket. Similarly, कोई फैशन के बारे में बात कर रहा है तो फैशन के कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज होंगे. सो जो दो लोग उन चीजों को समझते हैं, उनके बीच में एक ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो. सेम थिंग financially also, when we are dealing with finance and financial statements, दुनिया में कोई भी कहीं भी बात करे तो बैलेंस शीट में इन सब चीजों के बारे में ही बात करेगा कि भाई इस कंपनी का असेट्स इतना है, बट उसके लायबिलिटी साइड बहुत ज्यादा है, और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा गुडविल दिखा रखा है, बल्कि जबकि उनका इतना नहीं है, या फिर ओनर्स की इक्विटी बहुत ज्यादा है, या फिर इन्होंने एसेट साइड में बहुत सारे बैलून एसेट दिखा दिए हैं जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, या बहुत सारा पैसा ड्रेन हो रहा है, या लोन्स, नंबर ऑफ लोन्स बहुत ज्यादा हैं. सो this is a way to communicate in financial terms between two people who understand this thing. So टॉकिंग अबाउट रेशियोज, जो प्रशांत जी ने पूछा कि सर इससे हम रेशियोज और डिटेल्स में कैसे जाएंगे. सो मैं एक दो चीजें बता दूंगा जो हम बात करते हैं. उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो. डेप्ट इक्विटी रेशियो उसका मतलब क्या है कि कंपनी के कितने डेप्ट्स हैं, और इक्विटी या नंबर ऑफ शेयर्स जो हम बोलते हैं, टोटल इक्विटी, वो कितना है. सो डेप्ट इक्विटी रेशियो हम जनरल टर्म में किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो इट्स नथिंग बट द टोटल लायबिलिटीज. आप बैलेंस शीट में से टोटल लायबिलिटीज लो, उसको टोटल इक्विटी से डिवाइड करो, टोटल L बाई टोटल E. तो दैट इज योर डेट इक्विटी रेशियो. तो कोई बोलता है कि सर डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपका डेट जो न्यूमरेटर है बहुत ज्यादा है,
और इक्विटी बहुत कम है, that means company is taking on piling on debts. So the ratio will be more than 1. If the numerator is more than denominator, the ratio will be more than 1. So कौन सी कंपनीज बेटर होती हैं? वो कंपनीज बेटर होती हैं जिनका डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होता है. द कंपनी हैज लॉट ऑफ इक्विटी कंपेयर टू द डेट, so numerator कम हो in such a way that the ratio is less than 1. But it's not possible for all companies to have a debt equity ratio of less than 1. क्योंकि अगर आप एनबीएफसी हो, बैंक्स हो, फिनेंशियल हो, तो आप डेट रेज करोगे, you will have cost of funds. Let's say if you are NBFC, you will have to raise funds at a cost of funds, and then you will extend those funds as loans to some other uh, person, as a to a retail or corporate. So you have to give out those funds as loans to retail or corporate. So your debt equity ratio will always be more than 1. But since your cost of funds is less, you will make a margin, right? So that is one of the ratios that can be obtained derived from this. The another ratio is the debt to asset ratio. That is total liabilities divided by total assets. The this will be the liabilities or the obligations that is owed to lenders. ठीक है? आपका total debt asset ratio should be less. Similar to debt equity, your debt asset should be L by A should be less. Lower the better. And another ratio that can another point that can be derived is the working capital. Working capital क्या होता है? Working capital होता है आपका current assets minus your current liabilities. जो करंट असेट्स मैंने बताया, आपके बैंक में बहुत सारा कैश पड़ा है, आपको बहुत सारे अकाउंट्स रिसीव करने हैं, आपकी इन्वेंट्री में ऐसे आइटम्स है जो आप कैश आउट कर सकते हो, तो आपके करंट असेट स्ट्रॉन्ग है. और लाइबिलिटीज, आपका करंट लाइबिलिटीज एक साल में जो आपको लोन प्रीमियम्स देने हैं या जो अकाउंट्स पेएबल देना है वो कम है. So this shows that the working capital that the company has is good. It's nothing but the current assets minus the current liabilities. And similarly, you can have the equity to asset ratio, which you can uh, get. That is nothing but the percentage of the total assets that is funded by the uh, owners, the owner's equity. So that will give the equity to asset ratio. So if the equity to asset ratio is better, it is good. So this is about the ratios. और अगर हम नेट से जाके if we can see, we can we will pull out some balance sheets. Yeah, sir, I hope explained your this. Yes. We have couple of Yes, sir. more questions. More questions. So we'll take that. In the meantime, you're putting out the data. Yes, Ganesh, go ahead. Good evening, everyone. So, yeah, thanks, doctor. Okay, see, the question is, what as an investor, what I would look for is, is there any way to find out, or is there any stark differences in a large cap company, or mid cap company, or a small cap company? What I should, ignore in this, against the opportunity cost, or in a balance sheet? If something looks weird in that, what I should ignore into in a balance sheet? I mean, if I have to allow me to rephrase it again. What I would want to understand is, uh, I would be interested in investing in a company which has got more growth, and then I would want to take risk on it. But then when I go into the balance sheet of this company, whether the same yardstick to be used of a large scale company, or a large cap company, and the same yardstick to be used for a mid or small cap company, is the yardstick to be used, same yardstick to be used, or we have to ignore it based on that scale, on the capital size? That was the first question. Second is, if there is a fraud happening, is there any way to immediately identify that? I mean, like, I know it's a hard work, would be always a hard work, but
is there any way which we should like, okay, these are avoids, basically, red flags which could be avoided, and we just not waste time and look for things which would make sense to us that ways. Otherwise, it's again, we have to go by sector. That all is there, but yeah, from that angle, I would want to understand something. I mean, thanks, you are doing a lovely job. Yeah, yeah. Thank you for your kind words. So, yeah. So, regarding your first point, to look at the size of the company and to assess the balance sheet. So, we have three types of companies broadly: the micro cap, the mid cap, and the large cap. Right. So, this categorization is based on the market cap. Right. So, you have the uh, companies which are more than $1 billion, that is 8,000, 9,000 crore rupees, up to 10 billion. You say mid cap companies, more than 10 billion. Let us say 90,000 crore or 1 lakh crore, you say large cap companies. And below 8,000 crore, you say all these companies are micro cap. So always the as a retail in as a retailer, from the point of view of a retailer, I am telling you that money is made, the multi-baggers, whatever we say, जो भी fancy बोलते हैं, the money is made when a company moves from a micro to mid cap or mid to a large cap. That is where the money is made. Micro cap में world, if you go to a micro cap investing world, there are thousands of companies. तो सब आपको बढ़िया लगेंगे, सबके रेशियोज बढ़िया लगेंगे, सबके जो भी मैट्रिक्स हैं सब बढ़िया लगेंगे, क्योंकि क्योंकि उनका साइज छोटा है. राइट. सो यू विल फील कि ये सब रेशियोज बढ़िया दिखा रहे हैं, बिकॉज देयर देयर market cap is less, so they can have with a minimal asset, with minimal liabilities, they can have good ratios. But when you go to a mid cap company, a company which has moved from micro to mid cap and it is growing fast, वहां पे you will feel that there are some points which are not coming under your reasonable explanation, और आपकी जो rational thinking है उस हिसाब से आप नहीं कर पा रहे हो. That is because the company is going at a very fast pace. It is jumping from micro to it has covered, or it has come out of the micro cap world and it is running fast into the mid cap zone. So वहां पे आप देखोगे कि उनको करंट असेट से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, वो अपना नॉन करंट एसेट्स बढ़ाते जा रहे हैं. दे आर they are building their items. I told you, item which you can touch and item which has value but you cannot touch. तो माइक्रो कैप में से कोई मिड कैप में घुसेगा तो यू विल सी के उसका नाम बहुत चल रहा है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, एंड उन्होंने बहुत सारे जगह पे लैंड परचेस किया है, और वो बहुत सारी जगह अपना अपना प्लांट्स लगा रहे हैं. गुजरात में लगा रहे हैं, फिर आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला. सो दे विल बी ग्रोइंग फास्ट. उस हिसाब से उनके जो करंट एसेट्स, सॉरी, जो उनका टोटल एसेट्स का जो कॉलम है, वहां पे उनका आप देखोगे कि हर साल बढ़ता जा रहा है. सो दैट इज वाई एन इन्वेस्टर इज रेडी टू पे a higher amount for their share which is trading in the secondary markets. Similarly, from mid cap to large cap, तो जैसे डीवी स्लैब जैसी कंपनियां हैं जो धीरे धीरे करके मिड कैप से बढ़ के लार्ज कैप में पहुंच गई हैं. So those companies, so you will see that again their assets. So fast growing companies, their asset sides will increase very fast, and they try to reduce the liabilities part. To cope up with that, they will increase the shareholding. Promoter shares खरीदने लगेंगे, तो जो ओनर्स इक्विटी है वो बढ़ने लगेगी, लाइबिलिटीज घटने लगेगा. सो दैट इज द थिंग. एंड रिगार्डिंग द पिटफॉल्स कि आप पूछ रहे थे कि बैलेंस शीट में कहाँ, तो ऐसा ऐसा रिटेलर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कहाँ पिटफॉल्स हो सकते हैं, अनलेस यू आर ट्रैकिंग ए कंपनी क्लोजली फॉर सो मेनी ईयर्स. हर साल आप बैलेंस शीट उसका देखते हो तो आपको पता लगेगा कि कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है. सो यूजुअली क्या होता है कि कभी कभी दे मिस certain transaction, they do not show certain transactions in a balance sheet. या तो pitfalls
दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो आप ट्रांसैक्शन ओमिट कर देते हो, या आप गलत ट्रांसैक्शन उसमें दिखाते हो, या फिर आप इन्फ्लेट करके दिखाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि promoters have multiple companies, right? And you have uh, given a corporate guarantee for some other company, but you are not showing that in your balance sheet. Suppose a group has four companies, ठीक है? So let us say for example uh, Inox GFL ले लो, Inox you take uh, a company, yeah, it has Inox Wind, Inox Green, so तीन चार कंपनी। सो समझ लो कोई एक छोटी कंपनी है जिसको लोन लेना पड़ा, और उसकी कॉर्पोरेट गारंटी दूसरी कंपनी दे रही है इसी ग्रुप की, जिसका बैलेंस शीट अच्छा है, पर वो अपने उस बैलेंस शीट में वो कॉर्पोरेट गारंटी या कॉर्पोरेट लोन नहीं दिखाते। तो अगर वो छोटी कंपनी डूबती है, तो डेफिनेटली दोस लेंडर्स विल ask for their money and this guarantor has to give that money. So आप सोचोगे कि इतने सालों तक इसका बढ़िया चल रहा था बैलेंस शीट, अचानक से इनकी लाइबिलिटीज बढ़ गई। सो दीज आर पॉइंट्स विच यू विल मिस। एंड I have just pulled out from the internet Infosys का बैलेंस शीट, so you can see। तो अभी आप इसको देखोगे, so somebody who starting from the very basic, you will find that इसमें से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, राइट? तो मैंने बताया था कि कंपनी एक्ट बोला है कि वर्टिकल में देना है, असेट्स देना है, फिर लिक्विडिटी, लायबिलिटीज एंड इक्विटी देना है। सी, तो इन्होंने यहाँ पे दिया है इन्फोसिस का एज ऑन मार्च। सो आई टोल्ड यू इट्स अ स्नैपशॉट, इट्स अ सिंगल डेट, single point in time. So you have the March 31st, 2022 and March 31st, 2023. So you can compare. So non-current assets जो कंपनी के थे, things which you can touch and you cannot touch, इन्फोसिस का 2022 मार्च 31 को कितना था? 11,384, which has increased to 11,656, 11,656, 11,656 crore rupees of non-current assets. Current assets कितना है? I'm sorry, I just got it wrong. The property, plant and equipment. The property, plant and equipment was 11,656, and like that, different headings we have under current assets. The total current asset was 46,950 in 2022 March 31st and 49. So 3,000, almost 3,000 crores का उनका non current asset बढ़ा है. So this will be the tangible and the intangible. Current assets जो उनके cash and cash equivalents in the bank है, trade receivables है. So you can see, we'll just see on the cash. So you can see कि यहाँ पे मार्च 31 2022 they had a cash of 12,270, वो 12,000 करोड़ कैश पे बैठे थे, पर वो आधा हो गया। तो आपको पता लग रहा है कि इन्होंने 6,000 करोड़ कैश दे हैव स्पेंट, राइट? सो उसमें से 6,000 में से यू कैन सी कि द 3,000 करोड़, you can see that the 3,000 crore increase in that non-current assets, right? तो छह में से तीन आप यहाँ काउंट कर सकते हो कि 46,000 से 49,000 करोड़ हो गया। तो 3,000 करोड़ उन्होंने यहाँ पे असेट्स, नॉन करंट असेट्स में बढ़ोतरी दिखाई। सिमिलरली इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, यू कैन सी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में ये होगा कि इफ ए वेल मैनेज कंपनी एंड प्रोमोटर्स आर रिलैक्स, नो इश्यूज, जो इक्विटी पार्ट है वो उतना चेंज नहीं होता, वो उतना सिमिलर ही रहता है। लायबिलिटीज पार्ट यू कैन सी the non-current liabilities, uh, the non-current liabilities, you can see uh, from 5,000 crore 6,150, so almost 1,100 crores का उनका नॉन करंट बढ़ गया है लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटीज 99,000 करोड़ से 101, 1 लाख करोड़, वो भी ऑलमोस्ट 1,000 करोड़। सो 2,000 करोड़ टोटल इनकी लाइबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है, और एसेट्स में मैचिंग मैचिंग 2,000 करोड़। तो दिस इज द A should be equal to L plus E. So assets is also 1,013,777. Total E plus L is also 1,013,777. So that you can say कि उनका जो
accounting है, both sides are matched. So you cannot release a balance sheet without matching A is equal to L plus. Yeah. So this is how you know. Yes, Someshi. Yes, Vinodji, yes, you can go ahead with it. Vinod Kumar, गुड इवनिंग सर। Yes, good evening. good evening, good हाँ evening. सर, मुझे ये पूछना था सर, जैसे बैलेंस शीट में अगर जैसे किसी कंपनी की लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कम हो रही है, जैसे बैंक बारोइंग, हाँ हाँ, और उसके ट्रेड ट्रेड जो क्रेडिट अगर बढ़ रहे हैं, trade. क्रेडिट अगर उसके बढ़ रहे आवाज नहीं आ रही है सर आपकी बराबर। हैं। हेलो, हाँ सर, आ रही है Yes. सर। अभी हाँ आ रही है, बोलिए अभी सर, आ रही है, बोलिए. बोलिए। हाँ सर, जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो कम हो रही है, लोन जो कंपनी ने Yes. बैंक से लिया हुआ है, Yes. लेकिन उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बढ़ रही है। हाँ जैसे मान लो उसके क्रेडिटर अगर उसके बढ़ रहे हैं, हाँ. तो उसके बेसिस पे हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, उसकी अगर हमें उसको ट्रेड करना है कंपनी। या तो वो मैं बताया था आपको कि वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका वर्किंग कैपिटल, जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल, जो पैसा हाथ में उनके पास रेडिली अवेलेबल होता है एक साल के अंदर जिसको वो रोटेट कर सकते हैं, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप सारे लायबिलिटी एक साल में निपटाने की कोशिश कर रहे हो। सो सो इट इज अ फाइनेंशियली बैड सिचुएशन। इट्स लाइक तनख्वाह आ रही है और 2-3 दिन में पूरा का पूरा चला जा रहा है। सो व्हाट डू यू डू फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ? यू विल अगेन गो एंड बोरो। सेम थिंग यहाँ एक एक साल की बात हो रही है। तो अगर करंट लायबिलिटीज ज्यादा है तो क्या होगा कि जो वर्किंग कैपिटल है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है कंपनी का, कि कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई या कुछ एक्सपेंशन करना है, कैपेक्स करना है, तो वो अपने इंटरनल अक्यूरल से वो अमाउंट नहीं जनरेट कर पाएंगे। दे हैव टू गो एंड आस्क फॉर लॉन्ग टर्म डेट। वहां पे क्या होगा कि फिनेंशियली थोड़ा टाइट हो जाएगा कंपनी, बिकॉज उनका वर्किंग कैपिटल कम है। तो कभी भी अपना वर्किंग कैपिटल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एंड दिस इज जस्ट बैलेंस शीट। जो आप बोल रहे हो वो इज मोर रिलेटेड टू कैश फ्लो. So there are, as I showed you in the first slide, you have three financial statements: balance sheet, the cash flow statement, and the income statement. So P&L, P&L है, balance sheet है, और cash flow. So working capital आप compromise करोगे तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो flexibility है वो कम होगी. So it is better आप long term debt लो and you have current assets, strong current assets. कोई कंपनी इन्वेस्ट करने आएगी आपके ऊपर तो वो देखेगी कि आपके करंट एसेट कितने हैं, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हाउ विल द इन्वेस्टर गेट मनी विद इन 1 year ऑफ टाइम? ही विल हैव टू कैश आउट वट एवर इज रेडीली अवेलेबल. तो जिस कंपनी का करंट एसेट स्ट्रांग होता है उसमें ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं, राइट? आई होप आई एक्सप्लेन दैट. या थैंक यू डॉक्टर साहब। यस. Thanks, Vinodji. Yes, friends, anybody wants to ask anything? So, what I gauge from the questions that so far, if people are interested to know the red flags, Yes. which are the red flags, how to identify. Balance sheet say it's very difficult, as you said, Yeah. and it is actually. But there are other things which can be a red flag, like any board of director is resigning, auditors are resigning, Yes, sir. CFO is resigning. These are a red flags for the companies. Small cap companies में ideally debt equity ratio बहुत important रहता है. Because when cycle is good, it is अच्छा है, पर जब cycle turn होता है so they cannot sustain with the debt, because when it tide is in your favor it works positive, but it is against, then it equally impact you negatively. So debt उतना ही होना चाहिए जितना manageable हो with the cash flows. So there are a lot of red flags that, but वो सब over a period of time by experience will come to. Yes, कपूर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं? Anybody?
Anybody wants to ask anything, Ashwin? हेलो सर। Yes, Ramesh ji, बोलिए। सर ये बैलेंस शीट रीडिंग is one part, and there is a price in the stock. Ultimately, we are looking to gain from the market price movement. So, how accurately these two are correlated? I believe price will move much faster than the changes in the balance sheet actually come in. So, how these two things are correlated? I want your thoughts, sir. Okay. So price uh, is something that you see the CMP, the current market price. So कोई भी का listed company है. So as Warren Buffett says, uh, you have a buyer. Right? The market will come to you at your doors every day. It will come कि ये कंपनी है, मैं आपको इस मार्केट कैप पे, इस शेयर प्राइस पे देना चाहता हूँ. Then it will come on the next day. It will come on the next day, right? So share price is nothing but the market capitalization divided by the number of shares that are in circulation. So price, मुझे नहीं लगता कि उतना एक price I mean the number. We have to always look into the market cap. So आप अगर 1000 करोड़ की कंपनी है तो आप 10 रुपए शेयर प्राइस के 100 करोड़ शेयर में निकाल सकते हो, और 100 रुपए शेयर प्राइस के 10 करोड़ शेयर में निकाल सकते हो. तो एक शेयर प्राइस हुआ 10 रुपए का, बट नंबर ऑफ शेयर इन सर्कुलेशन इज 100 करोड़. दूसरा शेयर प्राइस हुआ 100 रुपए का, और नंबर ऑफ शेयर इन सर्कुलेशन है 10 करोड़, राइट? So because the number of shares in circulation is less, that is why the share price is 100. For the same company, the market cap is 1000 crore. So share price as such is a wrong metric to look. Share price देखना ही नहीं है. अब शेयर प्राइस देखना भूल जाओ. और कोई अगर शेयर प्राइस पे बात कर रहा है तो वो इजीली मिसलीड हो सकता है. वो गलत नहीं है, बट उसको मिसलीड कर सकते हैं कि वह ये 100 का था, ये 1000 हो गया. या कभी कभी आप देखोगे कि सडनली 15,000 का शेयर था, वो 3000 पे आ गया है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सस्ता हो गया. इसका ये मतलब ये है कि उन्होंने नंबर ऑफ शेयर सर्कुलेशन बढ़ा दिए हैं. तो प्रमोटर ने और जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनके सीधा 5 टाइम्स नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग 5 टाइम्स हो गई है. वो 15,000 के एक शेयर रखते थे, अभी उनके पास 3,000 के 5 हो गए. सेम थिंग. सो शेयर प्राइस यू शुड नेवर लुक. एंड बिकॉज द कॉर्पोरेट एक्टिविटीज आर सो फास्ट कि आप उसमें बोनस स्प्लिट और मर्जर्स एक्विजिशंस जो चीजें हैं वो सब मिस कर जाओगे. सो ऑलवेज लुक एट मार्केट कैप. हमेशा मार्केट कैप ही देखना है. तो मार्केट कैप और बैलेंस शीट, आई होप ये आपका डाउट था. तो मार्केट कैप और बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो हम कैसे बोले कि ये कंपनी एज अ पॉइंट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर, कि दिस कंपनी इज अवेलेबल फॉर चीप, और या फिर ये कंपनी इज एक्सपेंसिव. तो उसमें हम बैलेंस शीट के टर्म्स में अगर देखेंगे तो हम एसेट्स ही देखेंगे, राइट? तो हम देखेंगे जैसे हमने इन्फोसिस का एग्जाम्पल देखा. इन्फोसिस का मार्केट कैप आई डोंट रिमेम्बर बैक ऑफ माई माइंड 5 लाख 6 लाख करोड़ होगा, 5 या 6 लाख करोड़ होगा. तो उनका असेट्स कितना है? 1,01,000 करोड़ है, राइट? तो कितना टाइम्स हुआ? 5 टाइम्स या 6 टाइम्स. तो ये एक इट्स नॉट अ रिटर्न थिंग, बट ऐसा थंब रूल यू कैन से कि जिस जिस कंपनी का 5 टाइम्स 6 टाइम्स असेट्स है, रीजनेबल है. ठीक है. कोई कंपनी 100 करोड़ का असेट्स दिखाती है और 2,000 करोड़ पे ट्रेड हो रही है, सो आई एम नॉट दैट मच कीन टू लुक एट दैट कंपनी. बट कोई कंपनी है जिसका 100 करोड़ का असेट्स है बैलेंस शीट में, और वो कंपनी का मार्केट कैप स्टॉक मार्केट में 15 करोड़ का है, सो यू कैन सी द गैप. 100 करोड़ अगर आज के आज आप उस कंपनी के सारे करंट असेट्स बेच दो और नॉन करंट असेट्स भी आप ये कर दो, प्लेज कर दो, तो आपको 100 करोड़ मिल रहे हैं, और वो पूरी कंपनी आप मार्केट में 15 करोड़ रुपए में देख रहे हो मार्केट कैप. सो देयर इज अ 4 और 5 टाइम्स
catch up that is possible. So that is undervalue. कि आप asset देखो और market cap देखो. So this is one of the metrics that you can see. Somesh ji? Yes, thank you. Yeah, just like BHL, sir. Huh? If I can give an example. Yeah, please share. Yes. No, I'm just saying कि just like BHL, it was trading at some 20-30 rupees, but it's had good assets all over India. Yes. And now, yeah. So we could, based on if you want to buy fundamentally, looking at fundamentally, then we should look at if we liquidate the company, how much it can give, and what is currently its value. That thought process should be there, right? Correct. Very good. Yes, that is correct. And sometimes in pharma companies, what happens is that, जैसे मैंने बताया कि non-current में items which you can touch and items which you can touch and items which you cannot touch. So कोई फार्मा का कोई पाइपलाइन में कोई ड्रग और फॉर्मुलेशन दैट दे आर प्रिपेयरिंग, कोई जैसे बायोकॉन जैसी कंपनियां, सिंजीन है या कोई भी जो फार्मा रिलेटेड है, जो R&D पे बहुत पैसा खर्च करती हैं एंड दे आर ऑन वर्ज ऑफ कमिंग आउट विद सर्टेन पेटेंट और सर्टेन ड्रग, तो सडनली आपका वैल्यू अनलॉकिंग होगा. तो क्या होगा, जैसे ही वो मार्केट में वो ड्रग आएगा, यू विल गेन मार्केट शेयर एंड यू विल गेन रेवेन्यूज. तो वो आपके शेयर प्राइस को एक पुश देगा. सो इसमें कभी कभी उल्टा भी होता है कि देयर इज अ रूमर कि ये लाने वाले हैं, तो इवेंचुअली दे विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग इट, ऐसा भी होता है. तो इसमें लोग आगे पीछे कैलकुलेशंस करते रहते हैं कि ये ड्रग कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर का ये ड्रग आ गया, सपोज एंटी डायबिटिक ये ड्रग आ गया, तो इतना डायबिटिक पॉपुलेशन है इंडिया में और इतना इस कैटेगरी का कोई ड्रग दे नहीं रहा है, तो अगर ये ड्रग आ गया तो ये इतने सारे पेशेंट्स को मिलेगा, तो इतना अमाउंट मिलेगा, तो ऐसे लोग कैलकुलेट करते हैं. So in pharma, you can see certain quick fluctuations. So where the patent or the formulations are suddenly coming into the market and they are having huge revenues and they are suddenly increasing their assets. और कोई कंपनी को एक्वायर कर लिया जिसके पास ऑलरेडी फॉर्मुलेशंस हैं बट दे हैव नॉट ब्रॉट इट इनटू मार्केट. सो या फिर आपने कोई एक ऐसे ज्योग्राफी में एंट्री ले ली है, लैटिन अमेरिका में ले ली है जहाँ पे ये ड्रग अवेलेबल नहीं था और सडनली आपने वहाँ पे जाके ये अपने प्रोडक्ट्स रिलीज कर दिए, तो ये मेजर फ्लक्चुएशंस लाते हैं. ओके, या गो अहेड संजीव जी, बोलिए. नमस्कार सर. मैं honestly I'm not disputing anything of what you said and the content is okay. Yeah. But me being from the financial background, ओके, I want to tell you that when you showed the horizontal balance sheet, that Yeah. is assets on the left hand side and liabilities on the right hand side, right? यस, Sir, actually assets would be on the right hand side and Okay. equity and liabilities will be on the left hand side when you prepare a horizontal balance sheet. That is how ओके, we know that the balance sheet is prepared. So, आप sir, please check here so that you can rectify this mistake. By ओके. Point well taken, sir. Point well taken. So you are saying that you should come on the left side. Okay, I'll try to change next time. being the thing is on the always on the right side plus, and Okay. liabilities is on the left hand side. That Yeah, is yeah. how balance sheet, horizontal balance sheet is prepared. Okay, sir. Okay, no problem. Point well taken. Much Thank you, appreciated. यस प्रकाश जी, बोलिए. Hi Valsan sir, hi Somesh bhai and all other listeners. Hello, sir. अभी वॉल्सन सर को सप्लीमेंट करता हूँ. 2-3 बैलेंस शीट मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट आइटम है, काफी कुछ उसमें जानकारी मिल सकती है. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट फर्स्ट फिक्स एसेट्स, इफ यू लुक एट द फिक्स एसेट्स के अंदर आप जाओगे तो प्लांट मशीनरी में कितना पैसा डाला है, क्या किया है, बिकॉज अगर वो बढ़ते जावे, उन्होंने टाइम पे एक्सपेंशन करना है तो फिक्स एसेट्स में दिखना चाहिए कुछ. कंपनी फिक्स एसेट्स मींस प्रोडक्शन के लिए यूज करती है, तो मशीनरी वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी में कितना पैसा डालते हैं वो देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ सकता है क्या है, डेप्रिसिएशन के पहले ग्रॉस ब्लॉक बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है. तो वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर एग्जांपल मंदी के टाइम में कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रेडी रखती है तो तेजी में यूज कर सकती है. तो वेदर कंपनी इज पुटिंग यूजिंग मनी
फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल कैन बी विजिबल इन द फिक्स एसेट्स। तो वो एक पॉइंट रहता है डेटा पॉइंट देखने के लिए। फिर आपका वर्क इन प्रोग्रेस भी रहता है, न्यू सेटअप इज गोइंग ऑन, दे विल बी क्लासिफाइंग इन वर्क इन प्रोग्रेस। काम चालू है, कंपनी की कुछ एक्सपेंशन चालू है, तो उधर से आपको ये मालूम पड़ेगा कंपनी के वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ दिख रहा है तो भाई कौन सी प्लांट किधर डाल रही है, उसमें यूज कर रही है क्या, मतलब वो आइडिया मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट्स का कॉलम आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट्स में क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स विल बी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म वाला उधर होगा, नहीं तो ग्रुप कंपनी के कंपनीज में होगी। लाइक होल्डिंग कंपनी है तो ग्रुप कंपनी के शेयर्स रहेगी तो वो दिखाएगी। बट होल्डिंग कंपनी लाइक बजाज का जो होल्डिंग कंपनी है महाराष्ट्र स्कूटर्स, आप देखो तो उसमें सब आपको बजाज कंपनी की सब शेयर्स दिखेगी। सो दैट इज अ होल्डिंग कंपनी। सो उसका मेन धंधा तो इन्वेस्टमेंट वाला है। बट एक नॉन प्रोडक्शन वाली कंपनी अगर दूसरी किसी कंपनी में, लाइक फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा ने बोला कि मैं अभी वो बंधन बैंक का, आरबीएल बैंक का स्टेक लेने वाला हूँ, महिंद्रा महिंद्रा आरबीएल बैंक का क्या ये है, तो वो उसमें तो कितना सब बोला, वैसे कितने ये सब हो गई मार्केट में कि क्यों कर रहे हो क्या कर रहे हो। सो बैलेंस उसमें से मालूम पड़ता है कि अगर दूसरे कोई कंपनी में सब पैसा लगाती है कंपनी, तो अपना पैसा क्यों डाल रही है भाई दूसरी जगह पे। सो दैट इज वन एनालिसिस विच यू कैन लुक एट ऑन दी इन्वेस्टमेंट साइड पे देखो। देन आपका करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है। अभी कंपनी की इन्वेंट्री, इन्वेंट्री उसमें सब कुछ रॉ मटेरियल्स भी होता है, फिनिश गुड्स भी होता है। फिनिश गुड्स आप देखो, कंपनी के सेल्स के सामने फिनिश गुड्स देखो। इफ कंपनी की अगर 6 महीने की सेल्स इन्वेंट्री में पड़ी है तो उसका मतलब कंपनी का स्लो मूविंग है, क्यों हिलता नहीं है, वो एनालिसिस आपको मालूम पड़ेगा। फिर वो दूसरी उसकी इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनीज है उसके साथ कंपेयर करो। अभी सीमेंट में है, एक कंपनी की 6 महीने की इन्वेंट्री अटकी है, तो सीमेंट तो कैश का धंधा है, बाकी अल्ट्राटेक का होगा ही नहीं कोई डेटर्स, तो आपको रेड फ्लैग आ जाएगा कि भाई गड़बड़ है कुछ कंपनी में। तो एक एक चीज वैसे उसमें वो मिलेगी, कंपेयर करते रहो इंडस्ट्री के साथ में, तो इवन द इन्वेंट्री विल शो यू। सिमिलरली डेटर्स, डेटर्स में बुक डेटर्स खाली बढ़ाते जाते, कलेक्शन करते ही नहीं है। अगर फेक वाली कंपनी खाली बिलिंग करती है तो आपका डेटर्स कम ही नहीं होगा उधर, क्योंकि वो पैसा आएगा आता ही नहीं है कंपनी में, तो रेड फ्लैग हो जाता है कि साला कंपनी का डेटर्स क्यों इतना महीने का सेल्स का है। तो सेल्स के साथ में कंपेयर करना है, इन्वेंट्री को कंपेयर करो, डेटर्स को कंपेयर करो, और उसको सीधा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में अच्छा कंपनी जो सबसे लीडर है उसके साथ में कंपेयर करो कि भाई उसका इतना है तो तुम्हारा क्यों इतना है। तो दैट इज अ क्वेश्चन विच वन कैन आस्क। सो ये फिगर्स से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये सब है इश्यूज। लोन्स एंड एडवांसेस आता है तीसरे, तो अपनी सब्सिडरी को ही लोन दे रही है या दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, उसका ब्याज आता ही नहीं आता है, तो मतलब वो सब इंक्वायरी, मतलब उसमें ये सब देखने का रहता है। और ये सब काम तो ऑडिटर का है, ऑडिट कमेटी का है, वो लोग का नोट्स टू अकाउंट्स जो रहता है, उसके बाद में वल्सन सर बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो नोट्स टू अकाउंट्स है, जिसमें आपने बोला गारंटी का, कॉर्पोरेट गारंटी और कंटीजेंट लायबिलिटी वगैरह सब दिखाते हैं, वो कोई पढ़ता नहीं, मतलब वो बैलेंस शीट के बाहर के आइटम्स है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जो नोट्स टू अकाउंट्स में रहता है कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर। इट शोज क्या क्या टैक्स लिटिगेशन का किसी का नोटिस आया होगा, वो पैसा वो सब उसके अंदर रहता है। सो दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर नोट्स टू अकाउंट्स। सिमिलरली लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अभी हिंदुस्तान लीवर में क्रेडिटर्स हिंदुस्तान लीवर का ज्यादा होगा, डेटर्स कम होगा। हिंदुस्तान लीवर फॉर एग्जाम्पल कैश में बेचता है तो डेटर्स रहता नहीं है, बट सामने तेल वाले को, इधर वाले को वो लोग आराम से देते हैं, तो कैश जनरेटिंग बिजनेस हो गया हिंदुस्तान लीवर। वैसे ये लोग जो कैश वाले धंधे उनको तो क्रेडिटर्स को तो स्लोली देते हैं लोग। रेस्टोरेंट वाले बिलिंग अपने से पैसा ले लेते हैं, लेकिन तो उसके क्रेडिटर्स को तो बाद में देते हैं। तो ये सब धंधे में तो नेचुरली कैश इनफ्लो हो जाता है पहले। तो आपको वो दोनों मैच करके देखोगे, इंडस्ट्री वाइज देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री लीडर के साथ में देखना पड़ेगा फिगर्स, फिर आपको आइडिया आ जाएगी कि ये कंपनी कैसी कर रही है। सो ये कंपैरिजन करना जरूरी है, और तो एक एक आइटम्स को उस तरह से करना पड़ेगा। सो दैट बैलेंस शीट इटसेल्फ विल शो यू अ लॉट ऑफ the trend as to how strong the company is and all that. अभी तो अपना डिस्कशन बैलेंस शीट पे हो रहा है, तो लेट अस रिस्ट्रिक्ट इट टू दैट ओनली। आई एम जस्ट पुटिंग, बाकी तो आप जब कवर करोगे तभी होगा। बट ये सब डेटा पॉइंट अपने को बैलेंस शीट से मिलता है। इक्विटी और आपका बोरोइंग, नेटवर्थ एक हो गया, इक्विटी प्लस रिजर्व्स, कंपनी की रिजर्व्स, और रिजर्व्स के अंदर भी जाओ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है। और रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐसा रहता है कि उसमें तो कंपनी तो अपने रिवैल्यू करके बनाती है, वो रिजर्व का मतलब नहीं है। तो उसमें जनरल रिजर्व रहता है, वो इंपॉर्टेंट है, कमाई करके रखी हुई है कंपनी ने। और डेट, बोलते हैं ना डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। रेशियोज पे भी आप आओगे तभी आप बताना वो सब। तो वो सब कंपनी की मालूम पड़ती है, सब 100 रुपया इक्विटी है और डेट 300 400 500 करोड़ लेके बैठी है, तो डेट इक्विटी रेशियो खराब हो रही है, तो प्रेशर आएगा, कंपनी पे आ सकता है। उस हिसाब से कंपेयर करो तो काफी कुछ बैलेंस शीट से आपको मिल सकता है। बस दैट इज इट सोमेश भाई एंड वल्सन सर। इफ
कुछ भी आपको उसमें ऐड करना है तो प्लीज जस्ट सप्लीमेंटिंग योर डेटाबेस. Yeah, thank you, Prakash sir. बहुत दिनों बाद या Prakash sir, actually, you have given me a summary for having a next session from you. So, what We are looking forward for it. So yeah, yes, yeah. sir. Yes, yes. तो उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई बहुत बड़ा फंड हाउस कोई फंड मैनेजर ढूंढता है, तो उसमें वो लोग लिस्ट डाउन करते हैं कि व्हाट इज द foremost quality that you want to look for the fund manager to hire. और उसमें mostly the first point is that his hair should be grey. And so I would request all the gray hairs in our group to share their experience, like what. So I'm not body shaming you, Prakash ji, but I'm just trying to highlight your experience. So next time you may want to take this session based on your experience. That will help us as a group to enhance our knowledge. नो प्रॉब्लम सोमेश भाई, आई एम अवेलेबल. वल्सन सर ने जो फंडामेंटल चीजें की हैं, बिकॉज पब्लिक जो क्या लेवल के नॉलेज सबको होगा नहीं होगा, बराबर है बात उनकी. छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ही वुड कवर ऑल दिस, आई एम श्योर ऑफ दैट. बट ये सब है बेसिकली, कोई बोलता है ना रेड फ्लैग, आपने भी बोला था क्या क्या हो सकता है, ये सब पॉसिबल. ब्राइट कॉम वाला एफडी भी झूठा, एफडी सत्यम ने किया, ब्राइट कॉम ने किया, कैश तो दिखता है, ऑडिटर को भी नहीं मालूम पड़ा ना. किसको मालूम पड़ा? ऑडिटर, वो बैंक का स्टेटमेंट आता है तो मालूम पड़ता है कि वो सब फेक है करके. तो ऐसे भी पब्लिक करती है, उसको अपन क्या क्या अपन ढूंढ सकते हैं. सो तकलीफें है, बट ये सब इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करो तो समझ में आवे कि भाई इसका कैश, अभी आईटी वाला है उसका तो कैश तो रहता ही है सबसे ज्यादा, वो तो बाईबैक करता है, तो वो दूसरा धंधा में नहीं लगाता है क्योंकि उसको एक्विजिशन करनी पड़ेगी, नहीं तो आप बाईबैक शेयर होल्डर को वापस कर देता है. आईटी वाला तो उसका तो हमेशा कैश दिखता है. तो ऐसे एक एक चीज है, वो अपने को एक एक चीज समझ में आवे तो अपना दिमाग चल सकता है उस आइडिया. नहीं सही है सर. एंड the best way to read or understand companies is to see and study how companies have done fraud in the past. So that way you will understand, because mostly the fundamental mode of operators is similar, or you will find a similar pattern to it. So yes, friends, anybody has any question, or we may want to take this discussion to further in next session. ठीक है, Valsan sir, I think so. What we will do is that we will have a follow-up session to this. Maybe not balance sheet. It will be a carry-on. So I will take it forward from balance sheet to fundamental investing is what my thought process was. So we will. हाँ मिश्रा जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ऑडिबल हूँ? जी 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 सर. तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ आज काफ़ी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल्स के ऊपर दी गई. तो अगर कुछ लोग होंगे, सब यहाँ काफ़ी लोग हैं, बड़े जानकार और विद्वान लोग हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि उतने समझदार नहीं होंगे. तो उनके लिए थोड़ा सा मेरा इनपुट है मेरी तरफ से कि देखो, दो तरह का इन्वेस्टमेंट है. एक तो बहुत लॉन्ग टर्म का हो गया, 5 साल 10 साल 15 साल. अगर ऐसा आपका व्यू है मोर देन 2 इयर्स, तो आपको कंपनी के बारे में डिफरेंट सोर्सेस से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी और उनकी बैलेंस शीट को, डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह को, फला फला चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा. तो वो तो एक अलग चीज हो गई. दूसरी हो गई कि अगर आप 4 महीने 6 महीने 2 महीने या मोमेंटम प्लेयर हैं, साल भर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं या जो मैं करता हूं वो ये है. सबसे पहले टॉप लाइन देखनी चाहिए, उसके बाद बॉटम लाइन देखनी चाहिए. टॉप लाइन से मतलब है मेरा, जो लोग थोड़ी फाइनेंशियल लैंग्वेजेस से वाकिफ नहीं है तो सेल देखनी चाहिए. उसमें विदाउट सेल के नीचे एक लिखा रहता है अदर इनकम. तो अदर इनकम को छोड़ करके सेल को देखिए. 4 साल 5 साल की सेल देख लीजिए. अगर वो बढ़ रही है रेगुलर,
कंपनी अच्छी है, और अगर किसी साल बढ़ रही है, किसी साल घट रही है, फिर बढ़ जा रही है, फिर घट जा रही है, तो वो कंपनी ठीक नहीं रहेगी आपके लिए। दूसरी बात यह है कि आप प्रॉफिट देखिए। अगर प्रॉफिट कॉन्सिस्टेंटली बढ़ रहा है, प्रॉफिट आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट फर्स्ट, जिसको बॉटम लाइन बोलते हैं, तो आप प्रॉफिट को देखिए। अगर वो भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ता जा रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी है 5 साल में सेल डबल कर रही है, 5 साल में नेट प्रॉफिट डबल कर रही है, आप कुछ मत देखो उस कंपनी में। अगर उसका चार्ट ठीक है, सेटअप बैठ रहा है, आप एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा अगर अपना ज्ञान और बढ़ाना चाहते हैं तो ओपीएम परसेंटेज देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, और इसकी वैल्यू। तो इसमें भी देख लीजिए कि सेल के प्रपोर्शन में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर जैसे कुछ और देखना चाहते हैं तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट देख लीजिए कि डिप्रिसिएशन का अमाउंट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है, अगर ठीक ठाक बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि कंपनी इन्वेस्टमेंट तो कर रही है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, फैसिलिटीज के अंदर। तो इतनी चीजें अगर आप देख लेते हैं तो शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो इस बीच में जो कंपनी आपको ठीक लगती है, आपको लंबा एक्सपोजर लेना है, तो उसमें कंपनी की बैलेंस शीट में एक तो जो अपनी जो फ्यूचर प्लान्स हैं कंपनी वो देती है, हर बैलेंस शीट के अंदर एक कंपलसरी है, पढ़ने की आदत डालिए। वो थोड़ा लंबा डॉक्यूमेंट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल का पढ़ लीजिए, और थोड़ा ये समझने की कोशिश करिए कि जो बातें वो कह रहे हैं, जो फोरकास्टिंग उसके अंदर कर रहे हैं, वो एक्चुअली में बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो बिगिनियर्स हैं, मैं सोचता हूं कि उनको इतना बहुत रहेगा, और बाकी चीजें तो बड़ी एडवांस डिस्कस हुई हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। तो जो विद्वान लोग हैं वो उन पर फोकस करें, जो बिगिनियर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना मैंने बताया, टॉप लाइन मतलब सेल्स, बॉटम लाइन मींस नेट प्रॉफिट, बीच में ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज एंड वैल्यू, और एक डेप्रिसिएशन की वैल्यू। अगर इतना आप देख लेते हैं, आप मत चक्कर में पड़िए बाकी चीजों के, क्या है इन्वेंट्री का, क्या है रेशियोज का, मत पड़िए उन चक्कर में, वो अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। और धीरे धीरे उस कंपनी के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाइए, बैलेंस शीट को थॉरली पढ़िए, डायरेक्टर्स की जो फोरकास्टिंग है उसको पढ़िए, और देखिए कि अगले साल की बैलेंस शीट में वो ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। या थैंक यू सर, वेरी वैल्यूबल इंसाइट्स। और कभी भी किसी डिस्कशन का सक्सेस उसी उसी मैट्रिक्स पे देखा जाता है कि कितने लोगों का माइंड इग्नाइट हुआ, कि जो बोलते हैं एक ब्रेन सीडिंग या फिर एक थॉट इनिशियलाइजेशन, मतलब कितने लोगों को उनके माइंड में एक थॉट आया कि भाई हाँ, कि मैं भी इसके बारे में समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, अपने हाथ से एफर्ट और मैं डाल सकता हूँ। तो by seeing and listening to you all and the inputs that you have given, so I feel कि बहुत सारे लोगों का माइंड इग्नाइट हुआ है, जो जानते हैं वो अपनी नॉलेज और बढ़ाना चाहते हैं, जो नए हैं उनके लिए एक एक फाउंडेशन हुआ है कि इसके ऊपर वो बिल्ड करें उसके नॉलेज को। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। सर, तो अगर अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करते हैं, फिर काफी टाइम हो गया, तो किसी का क्वेश्चन है? क्या किसी का क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करते हैं। आई थिंक क्लोज कर सकते हैं विकास भाई। आई थिंक वी आर ऑल गुड, वी आर ऑल गुड। थैंक यू सो मच वल्सन सर, एंड थैंक यू others who have shared insight. It was really helpful session for us. Thank you so much. मिश्रा जी और प्रकाश जी, थैंक यू। हाँ, आप लोग का अगला सेशन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होना ही चाहिए अगला सेशन। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, everyone. थैंक यू थैंक यू प्रकाश वसंत सर। सर, सर, या Thank you, थैंक यू। Wilson sir. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you. Had a good session.